Hi guys, in Spotlight Current Event Analysis, now we are going to discuss GS3 UPSC Mains 2018 paper. We'll see the overall analysis, how they have asked the questions and all that, and the pattern of paper. Actually, pattern वही है as compared to 2017. There is no change in pattern. Same pattern, 10 questions for 10 marks and 150 word limit, 10 questions for 15 marks and 250 word limit. In case of marks distribution also, there is not so much changes. There is a little bit change. Okay. For example, in case of economy, they have asked for 75 marks in 2017, and now in 2018 they have asked for 65 marks, so 10 marks less. In case of agriculture, in 2017 they asked for 50 marks, and now they have increased that particular to 60 marks, 10 marks increase. Science, tech, environment 75 same. Security 50 same. But in case of environment, they have just asked one question in case of 2018. In 2017 there were 3 questions, so there is a little bit change in case of topics. So basically, if we will see GS3, so I will make one thing here. It is related with the current issues, and this paper is a very specific one. In case of question, जो पूछा गया है वो specific पूछा गया है. For example, long term capital gain tax, then dividend distribution tax, then they have asked Bose-Einstein statistics. So they are asking typically, है ना, role of supermarket in case of vegetables, fruits. So in case of previous year papers, there is a generalistic approach by UPSC. But in case of GS3 2018, they have asked the specific things, and because of that, we have to write specific answers. Otherwise, it will be problematic in case of marks. So ये specific लिखना ही पड़ेगा. So इतना दिखता है तो it was little bit hard one. Okay. So first of all, we'll see 10 markers. Sustainable development goals. So this is one of the most expected after Millennium Development Goals. It was in news, है ना? ये होता ही है news में always. So it's very important in case of India how we will tackle. So current से आया हुआ है सीधा. This one, second one is long-term capital gain tax and dividend distribution tax. It was these two terms in case of budget 2018 and 19. So they have asked that one. MSP. In case of budget, they said that government said that we will increase MSP 1.5. So these two things are directly from budget. The next one, that is role of supermarket. So MSP is also a basic concept. Okay, in case of economy, if you'll go and read economy syllabus, so MSP is a basic concept. Role of supermarket and peripheral foods, for example, vegetables, fruits and all that. So food processing is very important in case of GS3. Food processing के ऊपर है ना, number of food, mega food mark and all that. Mega food park scheme is there. Food processing, government is now focusing on food processing for the employment generation in rural area and all that. So migration will be less. So this one is very important. ये वैसे भी पूछा गया है, पहले भी इसके बहुत सारे रेफरेंसेस आते हैं, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्टली. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ एग्रीकल्चर. बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स, इस तरीके का सवाल नहीं पूछा गया था पहले. तो बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स ये टिपिकली फैक्चुअल सवाल है. मैंने इसके लिंक्स या फिर इसके लिए रिलेटेड जो आर्टिकल्स है वो टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर डाल दिए हैं आज की डेट में. सो आप देख सकते हो, टेलीग्राम की लिंक अपने हर वीडियो के नीचे होती है. सो बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स आप पढ़ सकते हो. दिस इज मतलब ये रिकॉल करने के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, शायद पढ़ा भी नहीं होगा बहुत सारे लोगों ने. बोथ साइड आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स, ये एक्चुअली सन प्रोजेक्ट जो है, ड्यू टू बिकॉज ऑफ दैट बोस एंड ऑल दैट, वो न्यूज में था सिंस 2-3 ईयर्स. बट इतना स्पेसिफिकली थोड़ा मुश्किल होता है कि हर किसी को पता हो. सो इस तरीके का सवाल आ सकता है, आए भी है बहुत सारे. इसमें हमें मतलब एक हाथ सवाल तो ऐसा होता ही है, नो नीड टू वरी अबाउट दैट. देन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सीधा है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन केस ऑफ एनवायरमेंट, शंकर आईएएस एंड ऑल दैट, कुछ भी पढ़ लो, उसमें होता ही है ये. देन वेटलैंड भी न्यूज में होती है. वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोजेक्ट 2017, इट वाज इन न्यूज. वेटलैंड के कुछ ना कुछ तो होता ही होता है, ये बेसिक कंसेप्ट ही है. सो दे हैव आस्क अबाउट द वेटलैंड, और इसमें स्पेसिफिकली पूछा गया है कि रामसार के 2 साइट्स लेके आप एग्जांपल्स क्लियर करो. सो वो इंपॉर्टेंट है कि आपको एग्जांपल्स पता होनी चाहिए कि रामसार साइट में कौन सी वेटलैंड साइट्स आती है, व्हाट आर द इशू रिगार्डिंग दैट. देन सिक्किम ऑर्गेनिक स्टेट. सिक्किम ऑर्गेनिक स्टेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, न्यूज में होता है. I have posted number of videos regarding Sikkim on our Telegram group, so you can see that particular thing. So organic state, actually, if you'll see there, Kurukshetra is very important for this particular paper because agriculture is there. है ना? In 2017 it was 50 marks and 2018 it was 60 marks. So 60 marks के लिए अगर agriculture पूछ रहे तो Kurukshetra is a rural development magazine. तो we'll get number of references from Kurukshetra, जैसे National Horticulture Mission है,
ये सिक्किम ऑर्गेनिक स्टेट के ऊपर भी कुरुक्षेत्र में आ चुका है. सो पर्टिकुलरली कुरुक्षेत्र इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर GS3. सो डोंट मिस कुरुक्षेत्र. देन CPEC, दैट इज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड वन बेल्ट वन रोड. चाइना है ना, वाई इंडिया डिड नॉट जॉइन दैट वन, दैट इज POK इशू. दैट China Pakistan economic corridor goes through the POK, Pakistan occupied Kashmir, and that's why India did not join that one due to because of it's a question of India's sovereignty. So ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो ये सीधा सीधा करंट से ही आया हुआ है. अब एक चीज है कि दैट इज CPSE वन बेल्ट वन रोड, ये GS2 में भी पूछ सकते हैं पर्टिकुलरली. तो बहुत बार हमने देखा है कि GS2 एंड GS3 वो मिक्सअप हो रहा है. GS1 में भी इस तरीके के सवाल पूछे गए कि जो GS3 से बिलोंग करते हैं, तो ऐसा होता है. सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट. दिस वन इज सिंपल वन. ये बहुत ही है ना कॉमन चीज है न्यूज में. देन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड विंग्स इन नक्सलाइज्म. Nowadays there is a news that is one term that is urban naxalism is in news. So वो भी पूछा जा सकता है in coming days. Already UPSC has asked that is what are the reason behind rising naxalism in case of Bihar. Specifically पूछा था एक बार. So left wing extremist के ऊपर है ना, ये करंट से ही आया हुआ है सीधा सीधा. इंटरनल सिक्योरिटी की कोई भी नोटबुक आप पढ़ोगे तो उसमें ये होता ही होता है. विल गो फॉर वन पर्टिकुलर वीडियो इन केस विल गिव दैट रेफरेंस बुक्स एंड ऑल दैट. सो 10 क्वेश्चंस फॉर 15 मार्क्स, 250 वर्ड लिमिट इज देयर. नीति आयोग के ऊपर पहली बार ही सवाल पूछा गया है कि दे हैव आस्क्ड कंपैरिजन बिटवीन नीति एंड प्लानिंग कमीशन. क्योंकि अब 3-4 साल हो चुके हैं, तो इन 3-4 सालों में सच में प्लानिंग कमीशन को मतलब उससे कंपेयर करके नीति आयोग ने कुछ अलग किया है या नहीं किया है. देयर आर नंबर ऑफ रिपोर्ट्स रिगार्डिंग नीति आयोग, हाउ इट इज वर्किंग एंड ऑल दैट. सो ये पूछा गया है एज कंपेयर टू. तो एक चीज होती है कि अगर किसी चीज को निकाल दिया, हटा दिया है, तो उसको छोड़ ही दो, ऐसा नहीं हो सकता. उसके जगह पे जो चीज आई है, यू हैव टू कंपेयर दैट पर्टिकुलर थिंग विथ प्रीवियस वन. ऐसा हो सकता है. सो दिस इज पर्टिकुलर एक सिग्नल दिया है यहाँ पे यूपीएससी ने. अगर कोई चेंज हम लाएंगे इन कमिंग डेज, तो वी हैव टू कंपेयर दैट चेंज विद द प्रीवियस वन. तो इस तरीके के सवाल कमिंग डेज में भी पूछे जा सकते हैं. देन वर्ल्ड ट्रेड से रिलेटेड प्रोटेक्शनिज्म एंड करेंसी इश्यूज. तो एडिटोरियल्स में आपको मिलता ही है. वर्ल्ड ट्रेड के बारे में एक दूसरा भी पूछा गया था, दैट इज इन केस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, दैट इज डोनाल्ड ट्रम्प का स्टेटमेंट था कि इन ट्रेड वॉर एवरीवन लूजेस एंड देयर आर ना टसल गोइंग ऑन इन केस ऑफ चाइना, यूएस एंड ऑल दैट. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये करंट से ही आया हुआ है. नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, ये आपको PIB पे में भी मिलेगा. इन केस ऑफ कुरुक्षेत्र ने इसको बहुत बार किया है, कवर किया हुआ है. अप्रैल 2017 में मिल जाएगा ये. देन क्रॉप पैटर्न्स एंड मिलेट्स. लास्ट ईयर ऑल्सो दे हैव आस्क अबाउट है ना, एग्रीकल्चर के बारे में ऐसे लास्ट ईयर आया था. देन एग्रीकल्चर के बारे में पर्टिकुलरली उन्होंने सब कुछ पूछा था कि सब्सिडी इश्यूज, क्रॉप पैटर्न, क्रॉप डाइवर्सिटी एंड ऑल दैट. वो 2017 में भी पूछ चुके हैं. अगेन दे आर आस्किंग अबाउट द क्रॉप पैटर्न. सेम वही रिपीट हो रहा है. देन बायोटेक एंड बायोफार्मा. सो वी शुड नो दैट इज I3 mission, that is Indian Biopharma mission. So it was in news. So ये सीधा सीधा वहां से आया कि role of biotechnology and biopharma in case of India. Then nuclear energy. Nowadays we are talking about a renewable energy, but यहाँ पे आपको nuclear energy के बारे में पूछा गया है. That is one very interesting article by Dr. APJ Abdul Kalam. है ना, अगर वो मिलता है तो I will post on Telegram group. Then biodiversity and इंडिया बायोडाइवर्सिटी एक्ट इन केस ऑफ इंडिया. बाम्बू को हमने ये किया था पर्टिकुलरली, ट्री एंड दैट इश्यू हुआ था सारा, तो उसमें भी ये बायोडाइवर्सिटी एक्ट न्यूज में था. सो बायोडाइवर्सिटी बेसिक कंसेप्ट है. बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑल्सो इट्स अ बेसिक कंसेप्ट, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ सिलेबस. तो वहां से आया है बाम्बू, ड्यू टू बिकॉज ऑफ बाम्बू इट वॉज इन न्यूज. देन सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 to 2013 अभी चल रहा है, ड्यू टू बिकॉज ऑफ दैट डिजास्टर रिडक्शन रिस्क करने के लिए, दैट इज डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए. सो सेंडाई ये वेरी इंपॉर्टेंट है. यहाँ आने वाले दिनों में 2015 to 2013 इसका जो पीरियड है पर्टिकुलरली, सो ये कभी भी पूछा जा सकता है इन कमिंग डेज ऑल्सो. दिस वेरी इंपॉर्टेंट कि इन केस ऑफ डिजास्टर्स है ना, वी हैव नंबर ऑफ ज्योग्राफिकल रीजन्स व्हिच आर फ्रीक्वेंटली डिजास्टर प्रोन इन केस ऑफ फ्लड, अर्थक्वेक, एंड दैट्स व्हाई दिस आर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर always expected. Then data security and BN Sri Krishna committee. This is very important. ये BN Sri Krishna committee आई थी. data security we have already discussed in number of videos regarding data security. For example, in case of Aadhaar and all that, artificial intelligence, data analysis, big data and all that thing. So that's why that data security is very important. In case of Aadhaar, they have provided lock unlock system. You can lock your data on that regarding Aadhaar on website, okay, particular website. Then drug trafficking, this is also current issue. In case of drug trafficking, if you will see, it was in news since Udta Punjab movie is there.
Then in case of now BIMSTEC summit was there, fourth summit BIMSTEC, and in his speech, our Prime Minister, he also mentioned these issues regarding the drug traffickings. We should know the Golden Triangle, then Crescent, Golden Crescent and all that, ये किस तरीके से सारा वर्कआउट होता है. So ये भी बहुत दिनों से मतलब न्यूज में बना हुआ है. So if you will see this particular paper, तो इस पेपर से एक चीज क्लियर होती है कि they have asked current issues, है ना, जो हॉट करंट इश्यूज है वो सारे इसमें कवर किए गए हैं, बट नंबर ऑफ टाइम्स दे हैव आस्क्ड इन स्पेसिफिकली. सो whenever you will study, तो prepare specifically so you can write proper answers. In case of mark distribution I have given, but my particular suggestion in case of GS3, you should go for editorial readings. Kurukshetra, these are very important. Newspaper and Kurukshetra is very very important in case of GS3. You will get number of things directly copy pasted from Kurukshetra. Kurukshetra is also important for essay, है ना. उसका जो टॉपिक होता है उसको उठा के डायरेक्टली डाल दिया जाता है कि उसी टॉपिक के ऊपर आपको ऐसे बोला जाता है. तो इस तरीके से बहुत बार हुआ है. तो कुरुक्षेत्र एंड न्यूज़पेपर एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग. एंड व्हेन कमिंग इन केस ऑफ कमिंग बजट, अगर कोई नई टर्म्स उसमें आती है या नई कंसेप्ट गवर्नमेंट लेके आ रही है, तो वी हैव टू प्रिपेयर दैट पर्टिकुलर थिंग प्रॉपरली. सो दिस वाज ऑल अबाउट GS3 UPSC Mains 2018. We'll also go for a GS4. You can follow us on our Telegram channel, the link given below this particular video. You can also follow us on Facebook, Spotlight Current Event Analysis page. Thank you guys.